श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। We welcome all of you to today's Bhagavad-Gita class. चतुर्थ अध्याय का We are studying 4th chapter, 4th verse. अध्याय के आरंभ में भगवान ने In the beginning of this chapter, Bhagavan said that निष्काम कर्म योग the Nishkam Karma Yoga वर्णित किया पहले he described earlier तीसरे अध्याय में। in the 2nd and 3rd chapters. पहले विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। He had told that earlier to Vivaswan, Suryadev, and Manu, Vivaswan to Manu, and Manu to Ikshvaku. In this way, the saintly kings, they received this knowledge. Why he is telling this? Because he wants to convey that truth never changes और and वो परंपरा से प्राप्त होता है। it is received in कोई भी parampara, जीव अपने आप सत्य because प्राप्ति नहीं कर सकता। no jiva can ever सत्य प्राप्ति know Satya, know the truth on his own capability. It is known only by from Bhagavan, because Bhagavan is Param Satya and the parampara begins from him only. परंपरा का महत्व So here he explained the importance of parampara so that Arjun should not doubt on the knowledge that Bhagavan is giving. Because at the end of 3rd chapter, Arjuna's question was that why are you engaging me in this ghastly war? जो है वो श्रेष्ठ है, On one side, you are telling that buddhi is superior to karma, meaning that jnana yoga is superior to karma yoga. Then why do you engage me in this ghastly war? So Bhagavan was not telling like this, but Arjun had this doubt. महत्व बता रहे हैं कि ये जो So Bhagavan is telling the importance लेकिन to Arjun. अनेक राजर्षियों ने He is telling that I am not just giving this knowledge to you. Many kings earlier also received this knowledge. They imbibed it in their life and they achieved perfection. So he is telling Arjun that you should not doubt on this knowledge. उनका मित्र है, He also said that Arjun is his friend, his devotee, होता है कि भक्त होने के नाते भगवान and it also proves that being a devotee, नहीं करेंगे। Bhagavan will not bewilder होता है his intelligence. साथ में आप कभी धोखा नहीं करते, Because if somebody is dear to you, you never cheat him. धोखा करते हैं तो वो And if you are cheating somebody, then that person cannot be your dear one. दोनों एक साथ Love and cheating both never go together. अधिकरण नहीं है। They do not have samanadhikaranya. The heart which has love cannot have cheating. तो इसलिए भी उन्होंने कहा कि That's why also he said that, और ये भी उन्होंने कहा कि ये रहस्य की बात है। he also said that this is a secret topic. It is not just some casual talk that he is giving. ज्ञान उन्होंने He is giving very important knowledge to Arjun. It is a secret, that's why it is not understood easily. And that's why Arjun may have doubt. और ये
बात उन्होंने इसलिए भी बोली ताकि And he ऐसे also को said ध्यान this देकर so that सुने। Arjun should hear him carefully. तो इस श्लोक में In this अर्जुन जो verse, है फिर प्रश्न Arjun पूछता है is asking कि question भगवान ने कहा कि मैंने ये because ज्ञान Bhagavan said that विवस्वान को दिया, he had given this knowledge to कैसे Vivaswan. संभव है? So how is that क्योंकि possible? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की Because आयु Arjun and Bhagavan Shri Krishna's age is almost same. तो विवस्वान तो बहुत पहले से है, And Vivaswan has been there since तो ऐसे long कैसे time. संभव है So how is कि it possible ज्ञान उनको दिया? that Bhagavan तो gave this इसलिए वो gyan प्रश्न to पूछता है Vivaswan? So he अर्जुन asks द्वारा, question. अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन ने पूछा, आपका Translation: जन्म Arjun inquired, बहुत काल your birth is पूर्व recent, हुआ है, while जबकि विवस्वान का Vivaswan's birth बहुत was पहले हुआ। long ago. How आप am I राजसूय to यज्ञ understand में that राजर्षि you होकर taught this उपदेश देते yoga to थे? him in the past? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस So प्रश्न this is a से very important question, सबसे पहली बात and तो ये है this कि first point is भगवान बोल रहे that हैं इसको, Bhagavan is इसका telling मतलब this, ये नहीं है कि हम उसको giving अंधभाव this में ले knowledge. लें। That does not mean that we अगर हमें just शंका है तो आप किसी accept भी it प्रश्न कर सकते हैं, with गुरु जी को blind faith. प्रश्न कर सकते If हैं, you have any question in किसी भी mind, you can गुरु ask जी को। Bhagavan, you can ask लेकिन Guru. प्रश्न जो है वो केवल प्रश्न But करने के लिए नहीं the होना question चाहिए, should not be just for the sake of ज्ञान asking, प्राप्त करने के but लिए it should be उपयोगी हो आपके to जीवन में। increase the knowledge, क्योंकि जब तक and मनुष्य that द्वंद्व should दोष में be से रहेगा, practically useful in your life, तब because तक हम किसी as भी long as you बात को, have किसी भी doubt ज्ञान in को the mind, then अपने पूरे उत्साह till से then पालन नहीं you कर will not सकते। be able to follow the path बाकी with अगर पूरे complete, उत्साह से with full करेंगे enthusiasm. तो वो तभी संभव है When we do any work with जब full संदेह न हो। enthusiasm only when we इसलिए have संशय no त्याग doubt करना बहुत about it. आवश्यक है, That is why it is नहीं तो very अर्जुन भी essential to get rid संशय of त्याग doubts. करता है। So Arjun is केवल also इस बात से डर के uh, कि भगवान हैं, asking doubts. इनसे मैं अगर कुछ पूछूंगा He is तो not ये afraid that because he is Bhagavan, if I ask him any इतने question, he विश्वास will नहीं be है, upset with me इस तरह से or he नहीं है। will complain that और ऐसी बात you भी नहीं do है कि not have faith भगवान on नहीं me. है It's तो not like that. And it is also ये not that विश्वास Arjun भी does नहीं not है। know that जैसे he is महाभारत में Bhagavan. राजसूय यज्ञ हुआ, It was known everywhere when भगवान श्री कृष्ण the ने Rajasuya Yajna for Yudhishthir Maharaj was held and सभी Bhagavan Shri Krishna was given the महाजनों Agra को, Puja, and Bhishma, who is महाजनों one को of the समझाया 12 जो Mahajanas कि धर्म के गूढ़ रहस्य को समझते who हैं, understands the उन्होंने secrets ही of Dharma, ये he सुझाव himself दिया था कि gave भगवान this श्री की advice पूजा होनी that चाहिए। the Agra Puja should be और done for उन्होंने Bhagavan Shri सुझाव ऐसे Krishna. ही नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि And this वासुदेव advice was not just something casual. He said that ईश्वर है। Vasudev is Bhagavan, he is महाभारत Ishwara, में पूरा he वर्णन is the किया गया Jagat है। Karta. So this is described तो in इसलिए अर्जुन Mahabharata. जानता था कि That's वो why भगवान है। Arjun knew that he is और अर्जुन Bhagavan. स्वयं 10वें अध्याय में जाकर कहेगा, परम ब्रह्म परम धाम Arjun will tell in the 10th chapter, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। और ये 10वें अध्याय में कहता है, ऐसे नहीं कि 11वें अध्याय का विराट रूप देख के कहता हो, and Arjun tells this in the 10th chapter, not after जिससे seeing बाद the में आपको Virat समझ Roop आया कि ये in the ईश्वर 11th है। chapter. Because you इससे may say पहले that बताया no, he saw Virat Roop and then he understood he is Ishwar. परम ब्रह्म है, परम He धाम told है, before seeing Virat Roop आदि only देव है। that you are the Param Purusha. ये सब विशेषणों का प्रयोग He उन्होंने used किया। all these adjectives for और Bhagavan. इतना सब कुछ जानते हुए भी So knowing all वो this, प्रश्न करते हैं still Arjun asks कि question to अपरम भवतो Bhagavan जन्म परम जन्म विवस्वत है, that कि आपका जन्म तो बाद में हुआ your है। birth is recent. तो इसके पीछे एक तो ये शिक्षा मिलती है कि So अगर मन one में point संशय is है तो that उसका if निवारण we have any कर लेना doubt, चाहिए। then we should get दूसरा it ये भी है clarified. कि अर्जुन जो है Other point is हमको शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन that तो जानते Arjun थे, is teaching us. Arjun already knows. इसलिए उन्हें क्या आवश्यकता थी ये पूछने की। So what was the वो need अपने for him to ask मन में this शिक्षा question? देते हैं So he is teaching us कि through this मन question में शिक्षा, मन में जो है वो संशय that नहीं रहना चाहिए। we should not harbor doubts in the mind, we should get इसलिए them उन्होंने कहा clarified. कथम एतद् विजानीयम्। That's why he दूसरी said, बात यह है कि भगवान ने Kathameta राजर्षि Vijaniyam. परंपरा Third प्राप्त point करके is, राजर्षि ये बात क्यों कही थी उन्होंने? why did ये बात Bhagavan उन्होंने क्यों say कही कि अर्जुन
Imam Raja Shayovidu. विश्वास दिलाने के He लिए told this to कि जिसका convince विश्वास Arjun हो इसमें so that he उसका should फल have भोगना faith. पड़ेगा। परिणाम हो गया क्या? But विश्वास what नहीं was हुआ। the result? The result is that ऐसा भी Arjun होता है had कि जब हम avishwas. करते हैं, दूसरे को कोई बात समझाते हैं तो So सोचते हैं it कि often शायद सामने happens वाले की बात we do something प्रसन्न होगा, and we explain उसका something to विश्वास someone बढ़ेगा, and we मेरी assume बात that this person will be very सुनेगा। happy and he will have more faith on तो me. भगवान But ने often it सिखाया, happens उन्होंने that सिखाया he है loses faith कि on me. So Bhagavan had told him that you are my friend, you are my devotee. I had told this to Vivaswan. So Bhagavan thought that now he will have full faith और यदि on कोई प्रश्न that करे whatever I am telling तो is यहाँ पर completely true and he will not भगवान ask अर्जुन को any बताइए doubt. But it हमारा had ये the ऐसा opposite मानना effect है on Arjun. कि जब हम So we किसी से should बात करते understand हैं that when we are speaking और हम with सोचते हैं somebody कि इस बात का and असर we हमारे think ऊपर ऐसा प्रभाव that पड़ेगा, तो कोई whatever I जरूरी am नहीं है कि वैसा ही telling will होगा। have such and such impact on that other यदि person, so it is not समाज necessary. में हमारा बर्ताव रहता है, हमारे So व्यवहारिक in जीवन our में human dealings, in इस our बात को भी practical हमको समझना dealings, चाहिए we should understand this, कि जैसा हम सोचते that हैं वैसा the दूसरा way नहीं we सोचता। think, the other हम person भी does not think like ऐसा that. ही सोच के चलते हैं कि जैसा मैं सोच रहा Although हूँ ऐसा we दूसरा assume पर्सन that सोचता होगा, whatever I think, the other लेकिन यही person गलत also है। thinks like that, but यही it सोचना is हमको not नहीं true. चाहिए, क्योंकि So we ये जो should बात हम imbibe this करते हैं teaching. If we keep remain aware about this आपस में point, अपने संबंध then ठीक रख सकते हैं। we will be able to और maintain यही proper relations संबंध among हमारे each other. आपसी संबंध हैं, जो हमारे And व्यवहारिक संबंध हैं, in our उनमें बहुत practical dealings, in our relations, समस्या रहती है इसी कारण a से। major और problem is इसमें because of this reason only. The ये misunderstandings मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो they इसी कारण से happen होती है कि due to this reason हम only, सोचते रहते हैं that दूसरे के we बारे में, keep thinking जबकि something वास्तव about में the ऐसा other होता person, नहीं है। although that is not true. तो ये बड़ी रोचक विषय है कि So this is a very अर्जुन interesting के ऊपर topic इसका अलग ही प्रभाव that पड़ा Arjun, the whatever कि Bhagavan वो spoke, अपनी बात he कहने had लगे thought something, but it had the opposite effect on और Arjun. वो सोचने लगे कि ये तो कैसे संभव है। So Arjun started thinking, how is तो that इसके उत्तर possible? में फिर भगवान So in reply to आगे this वचन question, बोलते हैं। Bhagavan speaks the next verse. श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने उत्तर Hmm. दिया, हे अर्जुन, Shri Bhagavan तुम्हारे replied, और मेरे O Arjun, अनेक जन्म हो you and चुके हैं, I have passed through many मुझे वे births. सब ज्ञात हैं, I know them all, परंतु हे but you do शत्रु not know भाव them, रखने वाले, O तुम मुझे scorcher नहीं of जानते। enemies. तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जन्म तो So हम here सभी के Bhagavan is telling बहुत हो चुके हैं that we have passed through और many births. अंतर इतना है कि मुझे The सब याद difference है। is that I remember them all, but you have तो forgotten them. यहाँ ईश्वर और जीव का भेद उन्होंने So दिखाया है। here he is showing कुछ the bhed between दार्शनिक Ishwar, the ये difference between सिद्धांत Ishwar रखते and हैं Jiva, कि एक because ही some जीव है, philosophers have ब्रह्म this ही है, opinion एक that there is one Jiva only, and that is Brahma. You call it Jiva, Brahma, Tattva. कृष्ण में भी अर्जुन में कोई अंतर So there is no difference between Krishna and Arjuna. दोनों एक नहीं है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं But the वो सब fact is, याद है both are not one. Both are not one. That is the मैं fact. अनेक अवतार हो Because चुका Bhagavan हूँ, is telling, I remember them all. कि मैं बार बार अवतार लेता हूँ, लेकिन उनको सब As he याद will है tell that I और keep appearing अर्जुन को again and नहीं again. याद He है। remembers तभी them. तो वो प्रश्न But करते हैं Arjun कि does not तुम्हारी remember सृष्टि his होती कब। previous births. If Arjun would have remembered, then he would have not asked this question. Because as far भगवान as eternality is concerned, Bhagavan is also eternal, न Jiva is also eternal. न He had told क्वचित् this in the second chapter itself. भूतनाधिप न चैव न भविष्यामि सर्वे वयम् अतः परम। तो ये तो उन्होंने कहा था अर्जुन को कि Bhagavan had तुम told मुझे this to जानते हो, Arjun that you, हैं इससे these पूर्व kings, तुम I, नहीं थे there was no, और भविष्य में never भी a ऐसा time नहीं when होगा we कि तुम were नहीं not रहोगे। there, and there will never be a time तो हम तो नित्य in हैं, future that we will not be there. तो So जीव we भी are all नित्य है, eternal. Jiva is परमात्मा also भी नित्य eternal. है, Bhagavan is also eternal. लेकिन दोनों में अंतर इतना ही है But the difference कि हम between सब both एक करके is that we भूल forget, गए। but Bhagavan does not forget. क्योंकि जो Bhagavan does उनका not ज्ञान forget. है वो His बुद्धि knowledge अविद्या से
is never afflicted जीव by ज्ञान से ignorance. आवृत हो जाता है, Jiva's knowledge gets उसे afflicted by भगवान के ignorance, पास by ले जाता है। avidya, due to his material attachment. और भगवान का ऐसा नहीं होता है। But this does not happen to Bhagavan. यहाँ भगवान ने उनको कोई तर्क नहीं दिया, अर्जुन को, Here, Bhagavan did not लेकिन give वो any अनुभव की बात बताते tark, हैं any logic to Arjun, but कि he is सत्य के just बारे में telling आप from नहीं his कह सकते, experience. So you can give लेकिन tarka, logic जिसका मूल regarding रूप है truth, वो तो उसका but अनुभव ही है। its original form will जो be सत्य का अनुभव through करता will है experience only, वो प्रायः and one बोलता who है और experiences truth does दूसरों not को give सिखाता है। logical arguments. He just इसलिए speaks. आप देखेंगे कि जो हमारे वेद That's why हैं you will see that our उनको Vedas, कोई विशेष तर्क से नहीं in समझाया, Vedas, there is no special logic and all तर्क given से समझाना है to तो दर्शन explain. करते हैं। This is what the philosophers do. They use logic राजा for जैसे explanation. बोलता But है Vedas instruct just like a king, कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं that you करना should चाहिए, do ये this, you should गलत है। not do this. वेद के The पूर्वोत्तर instructions ऋषियों and ने prohibitions are there in the Vedas. बद्ध Vedas मोक्षाय की Veda बात is बताई है mostly about और instructions and वही prohibitions. कहते हैं ना कि ये मैंने जो Bhagavan विधि दी है says वेद में, that this vidhi ये instructions that I have given in the मुक्ति के Veda, लिए दी है, that is वहाँ कोई meant to लॉजिक नहीं liberate है। you from karma. So जैसे there in Vedas, logic is not taught. ज्योतिषों में ये जे तो सर्व काम, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं Like it is said that if you want to go to Swarga, then you should do तो कहा Jyotish जाता है Tom, कि भाई fire ज्योतिष के द्वारा से sacrifice. So there, it is not स्वर्ग कैसे explained जाएंगे, logically that by उसकी doing Jyotish साइंटिफिक Tom, वैलिडिटी how नहीं will है। you achieve Swarga? अग्नि में आप कुछ What is भी the चीज logical डालेंगे, connection that अग्नि you में put जब here तक वो something in सिकेगा नहीं fire? उससे आप स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे। How can you achieve Swarga by that? यान या कोई यंत्र तो That नहीं है yajna जिससे is आप not a vehicle in स्वर्ग which प्राप्त you are कर sitting सकते and हैं, traveling ऐसा to कोई तर्क वहां नहीं दिया जाता। Swarga. All this type of argument is not given in Veda. Vedas जो directly give उसका order अपना अनुभव है वो आपको because बताएगा, the one आपको who समझाएगा, is instructing by समझाता experience. है। If you have Shraddha, और अगर बात you take benefit of the instruction, and if you do not have Shraddha, do not want to follow, इसलिए then do भगवान whatever जब you like. सीधा बोलते हैं So here also, Bhagavan कि is just directly telling, जन्मानी तब चार्ज नहीं, और बहुत एक अथॉरिटी से बोलते हैं। and he is speaking with ऐसा नहीं immense है कि अर्जुन के authority. प्रश्न सुनकर वो कुछ शक It is पड़ा या not that hearing उसको Arjuna's question, विभ्रम he लगा became कि ये embarrassed क्या प्रश्न or पूछ लिया, became doubtful that what ऐसा kind कुछ of नहीं था। question ऐसा Arjun नहीं has है, asked. I was never thinking also that he can वो ask this type of question सच्चाई बोल also. रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई भी प्रश्न He is पूछ not सकते हैं। worried because he is speaking the truth. यहाँ इसलिए Anyone can ask whatever वो he likes. एक बहुत So अथॉरिटी के साथ में he is speaking here बात with a कर lot रहे हैं of प्रामाणिक authority रूप से कि in मैं a very authoritative, जानता हूँ, pramanik way लेकिन that जैसा we all have passed through many births. I know एतानि them च all. भूतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। आगे भी इस बात को भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ जो अतीत हो Later गया also है। Bhagavan will say that I know everything, whatever has passed and whatever will happen in future and whatever is इसलिए happening now. I know all that. तो इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। That's why he is भगवान का एक known as एक्सप्लेनेशन Bhagavan. विष्णु पुराण में ये भी दी हुई है In Vishnu Puran, this is one कि of वो the explanations of भविष्य को Bhagavan, जानता है और that he is one who knows जीवों past, की present, गति and को भी future, and the इसलिए उसको भगवान destination of समझाते हैं। every Jiva. One who knows this is also called Bhagavan. कुछ योगी लोग भी होते हैं There are some yogis also जिनको भी अपने पूर्व जन्म का स्मृति रहती है, who remember their previous शास्त्र में life. वर्णन है This कि is एक बड़े described in योगी हुआ Yoga Shastra. He was a great yogi, Jaigishavya, यशस्वी, disciple of तो Asuri. उन्होंने कहा, So he उन्होंने told बताया कि उनको अपने पूर्व जन्म कितने याद हैं, एक कल्प के। he ब्रह्मा told को that भी he एक कल्प याद remembered है, his previous उसमें births एक of कल्प in चलता है, one kalpa, one day of 1024 Brahma, which has एक युग है, 1,000 cycles पूछ of लेते हैं 4 yugas. तो उसमें कितने जन्म होंगे। How many births will happen कहा in आपको that? ये सारे याद He हैं। told that I remember all of them. तो इसको देखकर ही आदमी सोचता है इतने जन्म कैसे याद हो सकते हैं किसी को। So now you may think that how is that कहा possible? जा How रहा है can somebody remember so many births? Now एक try to आदमी imagine अपने how many
but Bhagwan will remember. सबका उनको ज्ञान है। Since Anadi Kal, how many तो इसलिए जीव births have happened? की जो स्मृति है So उसको the चित्त में memory of संस्कार कहते Jiva, हैं। it is in the chitta as a हम लोग अपने sanskara. पूर्व जन्म याद कर सकते हैं। आजकल We can also हिप्नोसिस से remember our सम्मोहन previous life by उसी Purva सम्मोहन को आप Janma, by सम्मोहन के द्वारा through hypnosis, आपको पूर्व जन्म में ले जा सकते हैं वो। क्योंकि जितना भी हमारा अनुभव होता है because whatever वो सब experience we हमारे चित्त have, में जमा होकर रहता है। it इसलिए all remains in our chitta. वो अपना बड़ा रजिस्टर खोल के रखता है। So Chitragupta तो सब हमारे चित्त में बैठा हुआ है। maintains a big register. लेकिन So all this remains in our उस chitta, फाइल को खोलना और वहां but से डाटा opening निकालना that file and ये सब taking data सबको out of सबको that, उपलब्ध नहीं है। it is not available to everyone क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो बहुत because our चंचल है। buddhi is very much तो उस agitated. बुद्धि को अगर हम So if केंद्रित कर लें we can focus that तो हम भी buddhi, अपने पूर्व जन्म की स्मृति पा सकते हैं। then we can also get remembrance of our previous तो life. बुद्धि जो है वो हिलती रहती है। जैसे अगर दीवार पर कुछ लिखा हुआ So है according to our तो desires, उसको अगर our आप पढ़ना चाहते buddhi हो तो keeps आपको remains उसे agitated, भी वहाँ keeps wavering. एक टक लगा के रखना Like if पड़ेगा। something is written on the wall and if you उसकी want to तरफ read आप it, गर्दन को इधर उधर हिलाएंगे then you have to तो focus जल्दी से there. नहीं पढ़ If you सकते keep कि shaking your इसमें head, क्या लिखा how हुआ will है। you read easily? तो ऐसे ही सब कुछ हमारे चित्त में जमा हुआ है। Similarly, everything is stored in our लेकिन हमारी chitta, बुद्धि जो है वो चंचल but है। because our buddhi इसलिए is हम याद नहीं कर agitated, सकते। that's why we cannot इस remember. जीवन का ही हमको याद नहीं रहता है We do not remember so many things of this life कि आज itself. हमने सुबह नाश्ते में क्या लिया था। 2 days किसी back, से पूछोगे what तो वो did कौन we have बताएगा। for breakfast? How many people remember that? बहुत कठिन हो जाएगा। मैं पूछोगे It will बताइए be very 3 दिन tough. पहले आपने Tell सुबह how three दोपहर days रात में back, क्या खाया था। what did you eat for तो breakfast, सबका lunch, and dinner? ध्यान वहीं रहता है ना। Whether we are eating, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। our focus is on the food only. So even remembering that is तो योगा difficult. के माध्यम से But ये by the संभव help है। of yoga, it is जैसे एक possible. सूत्र भी आता है There is a sutra in Yoga Shastra. निष्क्रिय जन्म कथनता संबोधा। ये जो 5 यम हैं The 5 yamas अष्टांग योग में in यम नियम Ashtanga Yoga, there are yamas and niyamas. So अहिंसा there are 5 yamas. सत्यास्तेय That is समदम non-violence, truthfulness, brahmacharya, ये 5 को यम कहते aparigraha. हैं। तो So इनमें there जो are 5 yamas. So the fifth one, वो है अपरिग्रह। that is aparigraha. अपरिग्रह का मतलब होता है परिग्रह का मतलब होता है Parigraha means मालिकपना। proprietorship, अपरिग्रह का मतलब and होता है aparigraha मालिकपना ना means होना। not having sense तो of जिसका जितना proprietorship. कम मालिकपना होगा So the lesser you have the उतना sense ही of ज़्यादा proprietorship, चीज़ें the better will be your memory. क्योंकि जितनी आपके पास में बहुत सारी चीज़ें होंगी Because the उसी में आप more लगे रहेंगे ना। things you have, the more you will be entangled in all that. If you are वाहन है proprietor of many पैसा properties, है धन you है have a big building, you have और business, भी चीज़ें हैं property, तो and आपकी so many बुद्धि other ऐसी things, रहेगी then your व्यक्ति के पास में। intelligence will be entangled in that only तो जिसके पास में कुछ नहीं है वो अपने बुद्धि को due to केंद्रित कर attachment. सकता है ना। So one who doesn't have all this, ज़्यादा then he सोचेगा can तो उसके पास में focus his ऐसा कोई buddhi. नहीं विषय ही नहीं है। He doesn't have so many तो sense यहाँ पे objects अपरिग्रह to से agitate the कथन कर mind, रहे the हैं कि जन्म intelligence. की जो कथा है कब आपका जन्म कब कैसे So हुआ when you were born, ये how you सब were बताया जा born, रहा है। you can know तो that. ऐसे व्यक्ति को If you do not have this कहते हैं जाति स्मर। if you are having this aparigraha. जाति स्मर का मतलब होता है वो So व्यक्ति jati सदा smara अपने means पूर्व जन्म की याद same the करता है। person who remembers his बच्चे होते previous हैं life. Sometimes it also happens बातें that करते हैं कि मेरा some children they talk about their मेरे previous पिताजी ऐसे life. थे। ऐसी कहानियां आती रहती है My ना कभी कभी। parents are there. तो इसका मतलब ये संभव है याद We करना। hear of such stories. So that means it is लेकिन possible. कुछ समय बाद में But फिर after some खो time, जाती है वो भूल they जाते हैं। lose that memory. तो जगी So सव्य को जो है एक कल्प का याद था। Jagisavya, he remembered his previous birth still one लेकिन kalpa. उनके शिष्य ने एक प्रश्न पूछा But then his disciple asked a कि आपको question इतने जन्म याद that हैं you remember so तो many इन जन्मों births, में आपने सुख और दुख का अनुभव किया होगा। then you must सभी have को होता है experienced सभी के pleasure जीवन में and pain कुछ सुख in और the दुख previous होते births. हैं।
because everybody experiences pleasure and pain. कि Can आपके you जीवन say में जो that पिछले इतने सारे जीवन अगर आप your देखें previous births, तो उनमें सुख ज्यादा था या दुख so ज्यादा था? pleasure was more or pain was ये more? प्रश्न उनसे पूछा गया। This question was asked to तो him. उन्होंने क्या कहा, ये बहुत So what did he reply? मजेदार बात उन्होंने कही। This is very interesting. उन्होंने कहा कि He said जन्म दुख, that परिणाम ताप संस्कार, दुख गुण परिणामाद, दुख एव सर्वम विवेकिन। उन्होंने कहा कि he विवेकी पुरुष के said लिए that तो केवल for दुख ही a है, कोई सुख person नहीं of है। discrimination, जो मूर्ख हैं, पशु की तरह चलते हैं, जो उनको थोड़ा सुख भी दिखाई देता है। those who are like उनको सब animals, बात they पता see चलती little है, sukha also. पता But one चलती who है has कि discrimination, for दुख him, ही ज्यादा है उसको। everything is mostly pain only. तो भगवान भी इसलिए गीता में कहते हैं That's why दुखालय in Gita, मशाश्वत, Bhagavan also says, Dukhalayam Ashashvatam. जन्म दुख जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जब वो ज्ञान की व्याख्या करते हैं When he is explaining छठवें श्लोक में, Gyan, what 13वें is अध्याय में, Gyan, in the तो उसमें एक 13th बात ये भी chapter, कहते हैं कि he tells this अनुदर्शन also, करना ये भी ज्ञान that है। having anudarshan जन्म of दुख dukkha, जरा this व्याधि is also Gyan. दुख दोषानुदर्शन, कि अपने जीवन में देखना, To बार बार see in देखना, one's own life और हर again and जगह again that from where I am इसको getting ज्ञान इसलिए dukkha, कहते हैं कि वो that is also परमात्मा Jnana. तत्व वस्तु पर विचार So करता है। why is it called इसलिए Jnana? Because the लास्ट में person he reflects on the क्या tattva ये vastu. दुख जो है The वो आपको sukha, भुलाता है, pleasure makes you forgetful, नींद में ले जाता है, and pain makes you aware. और दुख आपको Pleasure takes you to नींद sleep, से निकाल के ले and जाता pain takes you out of sleep. It है। makes अगर you आप aware, makes you awake. सुखपूर्वक सो रहे हैं, गर्मी है और If एसी you are लगे sleeping happily, there तो आप is सोते रहेंगे, it is summer season दूसरी in चीजें AC, ध्यान you में are नहीं sleeping आएंगी, happily, and if शुक्र there आएंगे नहीं is आएंगी। if तो there दुख is भी no जब दूर electricity, जाता है then if current goes away, then तो you सुख wake up. आता है। So तो इसलिए happiness कहते हैं कि makes जो you विवेकी sleep, पुरुष हैं and वो दुख पे ज्यादा suffering ध्यान देते हैं makes you awake. ताकि वो जगे रहें। That's why the इसलिए people who have discrimination, तो इसलिए पशु they remain aware about the जागृत क्यों suffering. नहीं होते हैं? That's why you see animals, पशु they do not have much उनको ठंड suffering. लगती है, ऐसा नहीं है, They उनको they also feel heat, अगर आप but they हिमालय में remain जाएं quiet. वहां पर तो If you बर्फ see जैसी ठंडी the बर्फ गिर रही monkeys है, here, then they have such long hair on their आपके body. शरीर पर अगर इतने बाल हों Imagine if we have such long hair on our body, लगेगी नहीं, how much we will महसूस suffer नहीं in होगा। the heat. But the monkeys, they are तो happily ऐसे ही jumping around here and there. हमें ध्यान से It's not देखेंगे that तो हमें they do समझ में not आएगा। feel the heat. If you बाल notice carefully, they are गिरते हैं always तो थोड़ी सी itching गर्मी their लगती है, body, always scratching. शरीर में खुजली So होती है, if they are feeling so much of heat, उनको परवाह नहीं होती, then इसलिए obviously there will be a lot of itching, but they don't bother about all ध्यान that. रखते नहीं That's हैं। why they are called animals, because they do not तो see इसलिए the भगवान reality. यहाँ कहते हैं कि मेरे और That's आपके why जीवन here में Bhagavan is telling that बहुत you बीत चुके and हैं, बहुत बीत me, चुके हैं, both of us, आप नहीं have जानते, passed through many births. और I know यही them all, but you do not know. आप में भेद है, And this is the difference between you and me. जीव में और The भगवान में। difference between तो Jiva वही and बात क्या Bhagavan. है कि हमारी जो So, what is the स्मृति है main cause behind that? The वो main है cause is हमारे that our memory is not in our Swarupa. हमारी स्मृति हमारे स्वरूप के Our बाहर है। memory is outside our हमारा Swarupa. लिंग शरीर है, सूक्ष्म It शरीर is है, there in the Linga वो उसके Sharir or the भीतर है, Sukshma Sharir. It remains inside that. और आत्मा उससे भिन्न है। And Atma is आत्मा different सूक्ष्म from और that. स्थूल दोनों शरीरों से भिन्न है। Atma is different from both लेकिन gross भगवान and का the ऐसा subtle नहीं है, bodies. भगवान का जो अपना शरीर है But उसमें Bhagavan is शरीर और not like that. शरीरहीन का भेद नहीं है। Bhagavan, in case of Bhagavan, there is no भगवान difference between शरीर between Bhagavan and his body. एक ही These है, are not two different लेकिन vastus, हमारा जो है not two different सूक्ष्म objects. शरीर अलग है, But in our case, our Sukshma स्थूल Sharir is different, स्थूल the शरीर में gross body is different. 7 प्रकार Then के there are अंग हैं, other bodies also. There are जो actually हम seven समझ सकते हैं। types, but at least two we can understand that. It's Sukshma, the subtle body and the gross body. मनोमय कोश, Otherwise, Annamay प्राणमय Kosh, कोश, Pranamay Kosh, and so many koshas are described. तो इसलिए Kosh हमारी means जो the स्मृति body. है That's why वो our मनोमय कोश memory में रहती है, it remains in the Manomaya या Kosh. जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसमें रहती है, और भगवान वो आनंदमय है।
and Bhagavan is Anandamaya. He is Satchidananda इसलिए इन Vigraha. दोनों में आपस में कभी भेद नहीं That's होता है, why there is no difference between him हमारी and गलती his माफ हो body. जाती है। But in our case, we fall into forgetfulness. But he does not have that. ये प्रश्न भी किया जाता है कि And कितना this अच्छा question होता is अगर also हमारी asked that स्मृति how nice it would have been if भगवान में we हो। would also have retained our memory जैसा कई बार like लोग होते हैं Bhagavan. ना कि कहते हैं कि मैं जो इस जीवन में कष्ट उठा रहा हूँ वो अपने पूर्व Many जन्म times के people ask that whatever I am suffering, I am undergoing, it is due to the karmas of previous life, but I do not remember those karmas. I do not remember what wrong I had दुख की done. बात है मेरे को अगर वो So याद then नहीं it है। is wrong. If I would have remembered, it would have been लेकिन good. अगर हमको अपने पूर्व जन्म But की स्मृति रहे तो हम और ज़्यादा if दुखी होते we हैं have remembrance of our previous life, we will कि feel even more हमारे साथ miserable कितने अन्याय हुए हैं, किसने because we किसको don't know ठगा how दिया, many times कितने हमारे we would have met with मारे गए। injustice, अब or उसको we याद lost our रखेंगे तो property, or somebody was दुख होगा murdered. हमसे। So if we remember all that, then we will remain disturbed. जैसे If पूर्व some जन्म family में member dies, like now the airplane किसी ने crash मार दिया happened, तो हमारा if बड़ा दुख होगा। some of our relative would have been there, then we would have remained so much disturbed. उसको भूल जाएंगे But after some time, they will अगर वो also स्मृति forget. हमेशा ही बनी रहे आपके Now, पास if that memory तो आपके always साथ में जो लोग remains, जिनका बहुत ही then many people they become mad. प्रेम किसी से होता है उस व्यक्ति की If याद they आती है have some deep love for somebody and that person dies, पागल हो जाता है। then they go mad. तो ऐसा हो यहाँ पर हुआ था हमारे इसी So it संत कॉलोनी happens में एक in Sant बच्चा colony. मर गया था One तो उसकी boy मृत्यु had died, हो गई, उसने and क्या his किया था mother became totally mad, and she jumped from the building and committed उसके ख्याल suicide से वो निकलता ही नहीं है। because this was not getting out of her mind. तो अगर हम अपने पूर्व जन्मों को याद रखें तो हमारे कितने संबंधी मर गए होंगे, कितनी So if हमारे we साथ remember our दुष्कृति previous हुई होगी, lives, how many relatives would have died, तो अगर so हम वो many सब people याद would have रखें done injustice to तो us, हमारा our मन बहुत property would शांत have हो been जाता है। stolen. If we जब उसको remember all याद that, रखेंगे our mind will remain रात को so हम much जब सोने disturbed. की नींद So पड़ती it है is तो हमें good that याद we आता have है forgotten that. At कि night, हमारे we can साथ sleep दुष्कृति हुआ था। peacefully only when we forget everything. जब तक If हमारी our याद जीवित remembrance रहेगी continues, then how we will तो नींद sleep? नहीं आएगी ना। As long as जब your दिमाग में brain विचार is चलते रहेंगे functioning, तो नींद your नहीं आएगी। intelligence is functioning, तो इसलिए how will हम you क्या fall करते asleep? हैं कि हम इसको भूल जाते हैं, So it is good that we forget परम that, सुख से अपना जीवन इस and then we अभी जो can उसने जैगी सवैया ने peacefully कहा live. कि दुख और Otherwise, सुख what Jaigi Savya has said तो that थोड़ा बहुत it is all सुख dukha दुख and मिल गया। dukha, suffering only. So whatever अंग्रेजी में little bit कहते हैं happiness we इग्नोरेंस इज feel, ब्लिस। it is because we have forgotten that misery. थोड़ा सुख That's why मिल in गया English तो it is बस said ignorance is bliss. If we forget उस that, सुख को अनुभव then करते we हैं। can experience some pleasure. Otherwise, we cannot experience इसका that much amount of pleasure also. इसका कारण So बताते हैं after this, Bhagavan speaks कि अगर what is the भूलते reason नहीं है for तो आप the, बार because बार the याद question करते is रहिए। asked that if you do not forget anything, then why do तो you ऐसा take क्यों है birth, कि आप भूलते नहीं हैं, तो उसका and उत्तर why is भगवान it that आपको you do देते not हैं। forget anything? जैसे नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माय। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ Translation: Although I am परंतु birthless दिव्य and शरीर my जय transcendental body is immutable, योनियों का and ईश्वर although I am the independent होकर regulator of all मैं beings, प्रतीत होकर I still appear in मैं this अपनी world आत्माया while से remaining situated in my own essential form and nature through my यहाँ इस intrinsic श्लोक में power, Atma Maya. आत्मा और जीव का और So अंतर in this बताते हैं verse, कि he जीव is की elaborating more on the difference between him and Jiva. He जीव का is जो जन्म showing होता है that वो his उसके birth is कर्म not के like that of the Jiva. Jiva is born due to his उसमें karma. उसका कुछ स्वातंत्र्य नहीं है कि He वो does not have any independence to decide whether I should take birth or no, or where, from which उसमें parents. कोई हमने अपना Wherever we were born, we निर्णय या चुनाव did नहीं not have किया। any decision making इन बातों power में आपसे in बात that, करना चाहता हूँ। that we want to take जैसे कि birth मैंने from such बचपन and में such पुरुष जन्म parents लिया only. I want to have a तो female इसलिए body or a male हमने तो body. ऐसे चुनाव नहीं किया ना, We did not choose all हमें that. मिल गया। We just received मिला है that. वो कोई ऐसे ही तो नहीं मिल गया है, So इसका if you पीछे have कारण received है। it, there is वो some कारण cause है behind that, पूर्व some जन्मों के reason, कर्म, and the reason is the karmas of और our, कर्म के you know, अनुसार we से have हम done in जीते our हैं। previous lives. So आज everything, भी all this हमारे happens कर्म by हैं, because of karma only. कहाँ हैं, कैसे Whatever हैं, क्या birth करेंगे, kind of birth we get, किससे what will कैसे be रहेंगे, our age, हमारे with पूर्व whom we जन्मों will के live, कर्म with हैं। whom we will have relations, this is all decided by हम our जीवित हैं previous तो karma. अपनी स्वेच्छा
But Bhagavan's Janma is by his own independent will. हालांकि मैं That's आया why हूँ, he says that लेकिन although I मेरा am birthless, प्रकृति में uh, जन्म अधिष्ठाय है, अपनी ही still प्रकृति में I take अधिष्ठित birth होकर by being situated in my इस own Prakriti, आर्थ माया से, by my own लेकिन desire. मैं जीवों पर कृपा करके, माया Meaning, का मतलब कृपा भी होता है, Maya means Kripa, means संसार में mercy also. So, by doing that Kripa, I take birth, आजा तो वास्तव I में appear here. So, भगवान कहते actually, हैं कि Jiva is also unborn, he is also eternal. अव्यय हूँ, Bhagavan said that I am Aja and Avyaya, unborn and immutable. मैं But Jiva is also Aja, Jiva is also unborn, birthless. न जायते म्रियते Earlier in Gita, he had told, न used the भूतो word न Ajay for भविष्यति Jiva also. अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो, कहा ना, So there he had told वेद that वेद्य Jiva is Aja. एनम अजम अव्ययम, अज और अव्यय तो जीव भी है, So Jiva is also Ajay, उसमें कुछ Aja भेद and नहीं है, Avyaya. वेद Then what is वेद्य the difference वेद between the वेद्य Jiva and Bhagavan? स कथम पुरुष घातेति हंति च, तो दोनों में So समानता इस the common characteristic कारण इस विषय में है कि जीव भी between both is that भगवान भी Jiva is also Aja like Bhagavan, अव्यय है, Jiva is also Avyaya like जीव Bhagavan. जो है But वो the difference is भगवान की that बहिरंगा शक्ति के Jiva is under the influence of Bhagavan's Bahiranga Shakti, मालिक हैं, and Bhagavan is the owner of that उसके Bahiranga चलाने Shakti. वाले हैं, उसके He is नियंता हैं, the one who दोनों manages में it, अंतर है, who oversees it, और इसी के who कारण controls it. So जीव that is why अपनी स्मृति को खो देता है, Jiva forgets, he loses his उसका कोई memory स्वतंत्र नहीं है because he has अपने no जन्मों में पहुंचने independence in that, that where he should be का, born, कुछ how he should be कुछ याद born. रहता है और कुछ भूल जाता है, And by power of karma, he remembers some things and he इसलिए forgets जब other जन्म things. होता है तो वो जन्म भी लेते हैं, तो वो जन्म But it does not happen like that with Bhagavan. And even when Bhagavan is born, he is not born like us. That's भगवान why नरसिंह देव ने कहाँ से जन्म लिया, Bhagavan Nrsimhadev, from where did he कैसे जन्म appear? लिया, He appeared from the अगर pillar. आपसे पूछा जाए कि So नरसिंह if देव you की are माँ asked कौन है, that who is the mother of Nrsimhadev, तो वो कहेंगे उनका खम्बा, you will say that pillar. खम्बानंदन है ना, He is the son of the pillar, तो Khambanandan. वो अपनी इच्छा से प्रकट कहीं भी हो सकते हैं, So he can appear anywhere, wherever he किसी likes. स्त्री के गर्भ से ही It is नहीं, not necessary that he has उनके to मुंह take में birth from the womb of a woman only. नाक से निकल आए, Anywhere he can. Varadev उनको appeared इससे भी from कोई परवाह नहीं है uh, कि नाक से निकले तो Brahmaji's nose, अपवित्र हो and जाएगा, he is not bothered that if he has appeared from the nose, there will be some वो impurity. भी परम He भक्त is हैं, the supreme pure तो कहीं भी, क्योंकि उनका जन्म किसी से होता नहीं है, because भगवान he के is not born from सब anything. चीजों के जन्म स्थिति और लय के कारण तो वो स्वयं है, He himself is the किसी cause से भी नहीं for हो सकते, the creation, maintenance, and destruction of इसलिए everything. कहते हैं कि मैं अजर हूँ So, और who will अव्यय give हूँ, birth to him? और That's why Bhagavan is अगर telling कोई that I ये am पूछे birthless, I am कि eternal, I जीव am भी इसी तरह immutable. के हैं, तो कहे And if बिल्कुल somebody इसी says that तरह से Jivas हैं, are also like this, लेकिन then जितने the भी answer is जीव हैं जो भी अज और अव्यय हैं, that the Jivas मैं who उनका are ईश्वर Aja, हूँ, Avyaya, I am their Ishwara, तो वास्तव में I am their controller. अज और अव्यय होते हुए भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, So, even though we are Aja and हम उनके Avyaya, आश्रय हैं, birthless and इसलिए unchangeable, कहते हैं कि मैं we are not सनातन हूँ, independent, we are dependent on सनातन, Bhagavan. जीव को सनातन भी कहते हैं, अंश भी Jiva, कहते हैं, Bhagavan tells Jiva as है ना, Sanatan, eternal also, and his Angsha also, meaning that the Jiva is dependent on him, and Bhagavan इसलिए वो himself, he अपनी is प्रकृति में independent, he is अधिष्ठित होकर Swatantra. So, being situated in his स्वेच्छा से वो Prakriti, जन्म धारण करते by हैं, his own will, he जैसे takes भगवान birth, का जन्म जो है वो he वृंदावन में appears. होता है, So, like Bhagavan's द्वारका में birth, होता it है, happened in a तो वहाँ जो jail in माता Mathura. की माता के So when गर्भ he से was पैदा born होता है there, तो सीधे he आगे was उसके not born from the womb of mother. He just रहता है, appeared in front of उसके her कोई and वस्त्र stood नहीं होते, there in a four-handed वस्त्र form, धारण नहीं nicely करता, dressed up with शरीर में helmet, सब कुछ है, with his ऐसा कोई weapons, पैदा नहीं होता, paraphernalia, everything. Nobody is born like तो this. ये पैदा होने का मतलब उनका प्रकट होना है, So taking birth means इसलिए उनकी appearing. लीला It is कहते his हैं, leela. और फिर वो छोटे से शिशु भी बन गए अपनी इच्छा से, And then he became a small child also by his own desire. देखते ही देखते
देवकी माता को देखते In देखते the in front of his mother's vision, वो एक he छोटी सी शिशु transformed जैसा होने into लगता है, the form of a small छोटा सा baby, शिशु होता है। like any other ordinary child. और इसी को वो So this is his प्रकृति Leela. स्वाम अधिष्ठान, And this is what he says, Prakritim परमात्मा Swam Adhishtaya. Here, Prakriti स्वरूप, means this is his own Swarupa. प्रकृति का एक अर्थ स्वरूप भी होता है। Prakriti has one more meaning, that is of संसिद्धि Swarupa. प्रकृति तुम्हें स्वरूपम स्वभावश्च, कोश के अनुसार According to the dictionary, संसिद्धि का Prakriti प्रकृति means Samsiddhi, स्वभाव स्वरूप। Swabhava, Swarupa. तो ये अपने स्वरूप, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उसके प्रभाव से वो पैदा होते हैं, जन्म So लेते हैं। he appears उनकी by जो his लीला own शक्ति Swarup है, Shakti, उनकी जो लीला शक्ति है, उनकी meaning जो स्वरूप his, शक्ति है, his Swarup Shakti, his वो इस Leela प्रकार से Shakti, हमको it दिखाती है shows कि to जैसे उनका us भी in जन्म a हुआ है। way as if it appears और to us that हालांकि Bhagavan has also वो taken birth. स्वरूप में रहते And हैं, although he is लेकिन eternally in ऐसा his लगता है कि जैसे youthful Kishore एक Roop, शरीर but धारण then it करके वो appears बाहर that आता he है, was a small child, then his शरीर body से was निकलता है, growing, and he's also eating, he's also नर playing with लीला होती है। others. So this is all, this is his Nar Leela. ये आम आदमी की समझ में नहीं आती, And it is very difficult for an ordinary person to जहाँ सो understand, जागे सोई like जागे it is केवल told in भजन Ramcharitmanas. नहीं। तो यमेव शृणुते तेनैव लभ्य, उपनिषद में भी कहा है कि जिसको In Upanishad वो also it is दिखाना said चाहते हैं, जिसको that to समझाना चाहते whomever हैं, he wants to show something, उन्हीं he की बात wants समझ to में आती है, explain something, only तत्वज्ञ that भाव से person श्री can भगवान की बात करते understand. हैं। तो उनसे वो अपना ज्ञान छुपाते नहीं हैं, So भगवान Bhagavan does उनसे not hide the सीखते हैं knowledge और उनसे from फिर them. हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ And जो then from श्रुति these में people we बता get रहे हैं, knowledge. So here Bhagavan is तो explaining इसमें about बताया himself गया है कि only. ज्ञान जो So है as I told परंपरा से earlier, प्राप्त होता है, that this knowledge is इस received through प्रकार parampara only. कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस, कोई भी टेक्नोलॉजी इसको कैसे पता लगाएगी कि How भगवान will की some अंतरंग science or शक्ति है technology know और that अंतरंग this is शक्ति से Bhagavan's Antaranga रूप Shakti धारण करके and he is taking अवतार birth लेते by हैं? Antaranga योग Shakti? विद्या से इसको प्राप्त नहीं Nobody कर can सकते, know this. Even by Yoga लेकिन Vidya, it भगवान is जिस not व्यक्ति को possible. देना चाहते हैं तो उसको प्राप्त हो If जाता है। Bhagavan wants to give जैसे knowledge to परंपरा somebody, से he will get it. दीक्षित शिक्षित है, And those who are उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता initiated है। and educated in हम the समझते हैं parampara, इसको they can get ज्ञान this प्राप्त हो knowledge. जाएगा, ये तो सब ऐसे ही है, इसका मजाक उड़ाएंगे। Others they think it is, yeah, it is something casual only, तो दुर्योधन के just सामने a show भगवान off. प्रकट किए Like in कि front of मैं Duryodhan, विश्वरूप Bhagavan हूँ, showed his Vishwarup और ये also, जादू करके but दिखाते हैं। Duryodhan said that he is just doing some magic. यही कहा ना उन्होंने। तो इसलिए He told this only. जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ों So नाभिजात, those who are fools, तो जानता नहीं है कि मैं इस तीन गुणों से मैं परे हूँ। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भूता so नाम ईश्वरो Bhagavan says ईश्वर, that he is beyond the three ईश्वर gunas, होते हुए भी and even though he is the Ishwar of the प्रकृतिम स्वाम Bhutas, the अधिष्ठाय regulator of all living beings, समाया, वो अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर, यानी कि प्रकृति में अधिष्ठित होने का मतलब कि वो कर्म के अंदर being प्रभावित situated होकर in the Prakriti means that he is not born आत्म माया से, by karma. तो And आत्म here माया Atma Maya अपनी means कृपा से वो by प्रकट his होते own हैं। mercy he माया का appears. मतलब ज्ञान भी होता है, कृपा By भी Maya होता है, means Jnana also, it means Kripa also, meaning और अन्य mercy. कोई आवश्यकता नहीं है। Otherwise, ऐसा he नहीं has है no कि other हमें need. जन्म लेना ही पड़ेगा, हमें अपने Like कर्म we के are अनुसार forced to take birth जब according तक to our karma. We cannot stop it. जब तक कि हम अपने कर्म से मुक्त ना हो जाएं, तब तक हमारा जन्म Unless we become free of karma, that's another चलता point. रहेगा। But otherwise, our cycle of karma और continues. बार बार जब Then the ऐसा question is, why अनुभव does होता है Bhagavan appear? कि मेरे बहुत And he जन्म हो appears गए, again and again. And अभी as he जन्म है, said, that I have तो passed इसलिए through मैं many आता हूँ births. So why does he appear again आत्म and माया again? से, He does that by his मैं Atma इससे Maya. प्रकट होता हूँ। He says, I कई appear बार by my own ऐसा Maya. होता है कि मैं Maya सामने also दिखाता means हूँ, किसी को that I दिखाता show हूँ, in this world. लेकिन इसका I do अर्थ है not कि reveal who am I. कृपा करके वो प्रकट करते हैं अपने आप But he appears by having mercy on his जब own उनका अवतार का devotee. समय होता है And when it is the time for his next तब वो सबके avatar, लिए प्रकट then हो जाते हैं, he appears for everyone. और जब अवतार का समय नहीं होता है And when this is not the time तब for वो किसी avatar, से प्रकट then होते हैं।
So for some selected people, he can appear in their life. तो इस If समय it वो is not the time for his avatar and he is not available in the Prakata अभी Roop, दर्शन दे but सकते हैं, he can give darshana कृपा से दे now सकते also हैं। to the Siddha Bhaktas. So by तो his आते kripa, समय he तो does इच्छा that. होती है कि सब उनको देखें, When he appears as an avatar, he wishes that फिर सब everyone देखते हैं वो sees भक्त him. हैं नहीं हैं, सबको Whether दर्शन देते हैं devotee, उस समय। non-devotee, he gives darshan to असुर लोग भी everyone. उनका दर्शन करते हैं उस समय। भक्त की तो So बात ही the अलग है। asuras, they also get his darshan. What to कृपा speak की of the बहुत कृपा devotees? होती है सबके ऊपर। अब उसका कोई लाभ उठाए ना So this उठाए, is his mercy. वो Now भगवान whether की कृपा है। somebody takes तो भगवान benefit की or जो no प्रकृति है from Bhagwan's avatar, that is another point. So this Bhagwan's own वो धारण prakriti करती है, तो and जैसे श्रीमती राधा या रुक्मणी his own या energy, सीता and देवी when she takes या the form, she can जैसा take उनका अवतार appears है, as Radharani, Sita तो Devi, उस समय उनकी uh, प्रकृति according to स्त्री Bhagwan's होती है। form. So when Bhagwan appears, he has his तो form and इसलिए his prakriti will have a female form also. शक्तिमान का भेद Because Shakti and होता Shaktiman, है, they have Bheda. बिल्कुल अभेद भी नहीं है। It is not completely non-difference. So difference and non-difference both are there. अचिंत्य भेदा That's why भेद, our Siddhanta वो यही है कि is शक्ति और Achintya शक्तिमान Bheda Bhed. It is this तो only भेद that और अभेद दोनों between Shakti and एक साथ Shaktiman है, there is Bheda as well फिर as अचिंत्य शक्ति Abheda, से उनका difference भेद as well as non-difference. ऐसा संभव है। And it happens by भगवान his सर्वत्र हैं, Achintya Shakti, his inconceivable energy. अपनी So शक्ति Bhagavan से is all ही powerful, उनका but प्रकाश होता है। by his प्रकाशित होने भाव पर भी power only he reveals himself wherever he likes. Where he is not revealing, he is also present, but sometimes he reveals himself, sometimes he hides himself. शक्ति है, So this is his own energy. इसको त्रिगुण Generally, शक्ति मानते हैं। Prakriti is meant to be the Prakriti made of the material nature made of three जो gunas. शरीर को चिन्मय नहीं मानते हैं, So those who do not accept Bhagwan's body as त्रिगुण वाली प्रकृति spiritual, then here they take the meaning of Prakriti as made of three gunas. Their point is that Bhagavan जो is अंतिम mm, तत्व वस्तु है वो ब्रह्म है, the ये ultimate tattva भेद vastu is मानते हैं। Brahma, and that only takes on a इसलिए form. उनके मत में So in their भगवान का जो opinion, शरीर है वो भी Bhagavan material Shri है, Krishna's body is also material सत्व गुण से only, बना हुआ है। but it is made of sattva gun, और ऐसा शास्त्र में भी आता है सत्व गुण and से, it तो is वो said in Shastra सत्व गुण also और about विशुद्ध sattva सत्व में gun. अंतर नहीं करते हैं। So they do not differentiate between sattva and इसको vishuddha हमको ठीक से sattva. समझना So चाहिए। we have to understand this properly, otherwise we get वो लोग bewildered शास्त्र का प्रमाण because देते हैं, they also give Shastra Praman. सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। तो भागवत में चौथे स्कंद में लिखा हुआ है कि It जो is विशुद्ध mentioned in the सत्व है fourth canto in the उसको Bhagavatam वसुदेव that तत्व भी the बोलते हैं। Vishuddha Sattva is also known as Vasudeva अव्ययते Tattva. भगवान अपाद्रता है, तो उस विशुद्ध सत्व में ही भगवान का प्राकट्य So होता है। Bhagavan appears in Vishuddha Sattva वो only. प्राकट्य जो है ये His appearance भौतिक सत्व में नहीं it होता, does not happen in the material उसमें Sattva. In ऐसी material सामर्थ्य नहीं Sattva, है there is no कि power भगवान को प्रकट कर सके। to make Bhagavan appear, भौतिक to reveal सत्व की Bhagavan. सामर्थ्य इतनी ही है कि वो आपको Material Sattva आपकी देहली तक can पहुंचा दे। maximum take you to भौतिक the सत्व गुण जो है वो धरती take से you पार तो आपको नहीं ले जा near सकते, Brahma, because Sattva cannot भौतिक take you सत्व गुण beyond में this जाने world. के लिए तो आपको To त्रिगुण go beyond शक्ति this world, you need चाहिए, help त्रिगुण of बल something that चाहिए। is beyond this world, beyond the three gunas. तो जो ये लोगों का जो कहना है कि So these people, what आसन they करके say योग that you do साधना sadhana, you do से yoga, हम and by that मुक्त हो you जाएंगे, will become free of ये the ऐसा संभव gunas. नहीं है। All that is not possible. गीता में इसका स्पष्ट वर्णन भगवान स्वयं कहते हैं, And in Gita, Bhagavan explains this सर्वत्र clearly. योगेन अव्यभिचारेण सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो मेरे को अव्यभिचारी भक्ति से भजन He करता says है that वही गुणों those से who do रहित my होकर bhajan ब्रह्म को by प्राप्त होता है। undeviating bhakti, बगैर only they can चिकित्सा cross के over the three gunas. So without the उसको help प्राप्त of हो ही नहीं bhakti, सकता। नobody can even have realization of ज्ञान Brahma. होना एक बात है, लेकिन उसका Having अनुभव knowledge of Brahma is कैसे one thing, करें, but realizing that, क्योंकि experiencing that, सत्वगुण for that you need bhakti, because ब्रह्म sattva gun उसके can only ऊपर take तक you पहुंचा till the सकता है, threshold of सत्वगुण Brahma. ब्रह्म It दर्शन, can take you near that. लेकिन सत्व से पार होने के लिए तो
But in order तो to सत्व से cross over sattva, मुक्त हो, in order अगर to be सत्व से free from sattva, you इसको need help छोड़ना from है something, तो उसमें help of something that is free from the three gunas. क्योंकि अगर मेरे अपने हाथ If पैर you are बंधे taking हैं help of sattva guna only, then you will तो remain in इसको sattva कैसे only. If my hands are tied, how can I इसे पार release करने my के लिए hands जो with my आवश्यकता है own tied तो ये hands? प्रकृति That's से है, why इसलिए to go beyond the three gunas, you need the ये help of प्रकृति bhakti. नहीं है। That's why here the प्रकृति meaning of prakriti is not material इसलिए ये prakriti. कहते हैं कि इस प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय है। Because here Bhagavan is telling Prakritim Swamadhisthaya. This is his own तो Prakriti. ये बहिरंग शक्ति भी है तो उन्हीं की ही, So this Bahiranga ये भी Shakti, material बहिरंग है nature, also belongs to him only, but it क्योंकि is उनके अंदर है, Bahiranga. उनकी It स्वाम is not शक्ति in है। him. स्वाम का This मतलब is not in his स्वरूप शक्ति, Swarupa. Swam means his जितनी Swarup भी Shakti. शक्तियां हैं ये He केवल has स्वरूप two types of शक्तियां हैं, Shaktis. One is इसलिए Swarup वो Shakti आसक्त and one नहीं, is तटस्थ the कहीं नहीं Shakti है, which is outside of his Swarup. लेकिन वो Whether स्वरूप you से call it बाहर है। Tatastha or तो Bahiranga, स्वरूप से बाहर but है it तो is वो क्या outside है, Swarup. वही स्वरूप भगवान So भी स्वरूप being से outside बाहर है means तो वो what? कुछ भी नहीं है, Actually, there is nothing इसलिए वो outside of कोई Bhagavan. इनको प्रभावित So नहीं करता। point is that it does not इसलिए influence कहते हैं कि Bhagavan. इनके बाहर कुछ भी नहीं Actually, है, there is nothing outside सब इन्हीं के Bhagavan. अंदर है, Everything is in him सब कुछ only. इन्हीं के अंदर है, तो इसलिए Bahiranga is also in him only. Then why do we call it बहिरंग कहने Bahiranga? का अर्थ यही है कि Calling इसके Bahiranga अंदर जो means विकार होते that हैं all the वो transformations that प्रभावित नहीं happen in the करते, Bahiranga Shakti, they do not influence him. They do not वो affect him. उनके प्रभाव में नहीं आते, Meaning that he does not become क्योंकि influenced by this. So अधिष्ठाता भी वही है, he is the चलाने वाला भी Adhisthata वही for है, this also. He is the और ये प्रकृति maintainer. जड़ है, And this Prakriti is उन्हीं Jada. नैकट्य से, उन्हीं की सन्निधि It is से inert. इसमें चेतना So आती है और ये by कार्य Bhagavan करती है। Sannidhi only it तो gets ये स्वाम becomes conscious, it शब्द starts से है, working, but it cannot इसलिए influence प्रकृति Bhagavan. स्वाम कहा यहाँ पर, So here it ये is said शब्द का Prakritim प्रयोग नहीं Swam. किया, Only Prakriti word is not used by Bhagavan. He says Prakriti संभवामी, Swam Adhisthaya. संभवामी का मतलब And सम्यक भवामी, Sambhavami means Samyak ये Bhavami. भूसत्तायाम में सम्यक So रूप से प्रकट in होता हूँ, Bhusattayam, I सम्यक appear रूप in the से प्रकट Samyak होने का मतलब root means यथार्थ in रूप the से प्रकट होता हूँ। means I appear by my जो ईश्वर Swarupa. हैं So he is वो जब Ishvara. शिशु रूप में है, रहते हैं When he is in the infant for child form, इसलिए then प्रकट also हो he is जाते हैं, Ishvara जैसे only. उन्होंने नारद जी That's को why on the sixth day he killed सती का वध Putana. याद दिला दिया ना उनको। तो ये तो बच्चे के लिए तो संभव नहीं है ना, पूतना तो बहुत This is बड़ा not possible for a child because जिसको छोटा देखने में Putana was so huge as तो she ये is दिखाया described. उन्होंने कि मैं छोटा देखने में छोटा हूँ लेकिन So मैं he is ईश्वर showing हूँ। that I look small, but still I am Ishvara. भूतानाम ईश्वरोपि सन का मतलब चाहे उनका So Bhutanam शरीर छोटा है लेकिन Ishwaropism ईश्वर है। means that whether his body appears small, big, or even if you don't see, in all cases he is Ishwara ईश्वर का only. मतलब वो And पूर्णता he is स्वरूप है, Ishwara means he has complete पूर्ण energy. शक्ति है, He उनके is अंदर full of पूर्ण Shakti. समर्थ है। There is never any तो इसलिए decay in his ऐसा नहीं है कि Shakti. हम छोटे बच्चे It को is देख not करके like that हमारे with लिए कुछ us. भी हो When we were जाइए, small बिस्तर child, पर पड़े we रहो, have no power, just like अपने on शरीर the को देखो, bed. पर And ईश्वर as को we देखो grow up, our energy तो आवश्यकता से increases. लाके घट जाता But है। then in old age again तो energy भगवान की शक्ति decays. का बढ़ना घटना So ह्रास all होना ये this सब नहीं है, increase and decay, all this does not happen with अगर ऐसा वो Bhagavan करते for his दिखाते हैं Shakti. तो अपनी लीला But के if he is द्वारा showing अपनी that, सखाओं के साथ that is just a Leela because when he is तो उनके playing with his प्रभाव में friends, आते हैं, so वो he अपने कंट्रोल also में हो जाते हैं। loses तो in the games, he takes जब them ईश्वर का on वध his है तो उसी रूप में shoulder. वो वृषभासुर आता है तो उसको But मारता है, then, if नरसिंह required, he नरसिंह kills अवतार the लेता such है, big demons also. गोवर्धन उठाना हो तो उसको He उठाता है, lifts तो बच्चे Govardhan नहीं कर also. सकते हैं इसको। Can the other children lift Govardhan? भगवान को कबड्डी The में children हरा दिया who हो defeated तो Bhagavan नहीं in कर the सकते games हैं, like kabaddi or wrestling, can they lift इसलिए वो Govardhan? शक्ति उनमें हमेशा रहती है, So लेकिन Bhagavan's जब Shakti is आवश्यकता always पड़ती है there तो in प्रकट him, करते हैं, but when required, he उनकी माधुर्य reveals लीला that. रहती है उस समय Otherwise, it उसमें। is his Madhurya Leela and he does not reveal his तो ये Aishwarya. अर्थ है यहाँ पर, So this is what he means here. ये उनकी अपनी शक्ति है जो कभी घटती This is बढ़ती his नहीं own है, energy which neither और increases nor decays हमेशा उनमें रहती है। and always तो remains in वो him. अवतार धारण करते हैं मतलब हमारे So he takes avatar means सामने प्रकट हो जाते हैं। he appears in front of our तो अगले eyes. श्लोक में वो बताएंगे कि वो So किस then कारण in the से next verse he will speak प्रकट होते हैं, what is the reason for his appearing in this world. चर्चा नहीं करेंगे। We will study that in the तो next बच्चों यहीं class. समाप्त करते हैं, We किसी will को कोई stop here प्रश्न for पूछ today, सकते and हैं। if you have any question, you can ask.
संदीप जी का प्रश्न है, Question: क्या पूर्व जन्म के विषय में जानकर कोई फायदा हो सकता है? Is there any benefit of knowing पूर्व about जन्म के विषय में previous जानकर life? कोई फायदा हो सकता है? फायदा किस तरह का फायदा? What type of benefit do you want? मतलब फायदे तो अनेक प्रकार के होते हैं ना. Benefits are of many types. You want any profit in business, or were looking for any partner or anything? What type of benefit are you looking for? Spiritual, material? उनका दूसरा प्रश्न है, क्या परम अपरम जन्म के लिए भी उपयोग किया जा सकता है? क्या Can चालीस param and कोस aparam पुरुष be words be भी used परम for ज्ञान के लिए प्रयोग janma होते हैं? also? In 4.4 is param aparam for gyan only. अपरम भव तो जन्म, जन्म के लिए प्रयोग किया. So he has used for janma. यहाँ तो जन्म के लिए प्रयोग किया है, ज्ञान के लिए कहाँ प्रयोग किया? He has used for janma, not for gyan. परम अपरम आपने न्याय में पढ़ा है ना. In देश Nyaya काल you have studied, no? Param and aparam. They are used for deshakal. तो काल के लिए भी होती है, देश के लिए भी होती है. It is for kal also, desha also. परम का एक अर्थ ऊपर नीचे होता है, सुपीरियर. Param aparam also means superior, inferior. तो एडजेक्टिव है, आप इसको कहाँ प्रयोग करोगे? So it is adjective, depends where you want to use it. यूट्यूब से एक प्रश्न है कि क्या Question: व्यक्ति अपने बचे हुए अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरा जन्म नहीं लेता है? Does a person not take second birth to incur the reactions of his previous karma? So who is telling he doesn't take birth? Whether good results or bad results, you have to take birth. मेरा एक प्रश्न है, आपने बताया कि ब्रह्म Question: ज्ञान और you ब्रह्म का said साक्षात्कार होना that ये दो अलग बातें Brahma, हैं। having knowledge of Brahma ज्ञान होता है ना, and experience of Brahma is different. So knowledge means shabdik word knowledge. गुण में ही तो ज्ञान होता है. So for that you have to be in Sattva Gun only, because knowledge happens in, you get knowledge in Sattva Gun only. गौर जी का प्रश्न है, Next जब question: कृष्ण when प्रकट Krishna होते हैं appears, तो क्या कोई would a webcam देखते see हैं? him, क्या or उनकी is his स्वतः body प्रकाश रहता है 100% और transcendental and non-material? वेबकैम मतलब फोटो. Webcam means, are you talking about taking his photo? Yeah, you can see. What is the problem? देख सकते हो तो एक If कैमरा. our eyes can see, then webcam eyes also work like a camera only. So webcam also works like that only. बैठ के प्रवचन करते हैं So if Krishna would be giving lecture today, you could have कर सकते थे. broadcasted it on YouTube and seen him even on Zoom. शायद वो इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि हम देखते हैं कि भूत जो हैं वो कैमरे में कैद Maybe नहीं he's asking because we see that ghosts cannot be seen on camera, but Krishna is not a ghost. वर्तमान है न भविष्य है न भूत. He is present. तो वर्तमान He is neither past, present or anything. हो गया. प्रार्थना श्लोक. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण्यप्येकं तस्य देवस्य सेवा. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्.
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।